Yes. Yeah, I hope you are able to see this and listen to this properly. Here we go. The cap round has started. Now, please, I'm going to make it short and simple. I'll try and make it talk about on important things. That's as simple as it gets. Point one, I've already shared with all of you a video which we made last year, and the process is exactly same. It's exactly the same process. So I'll first discuss about how to register. And trust me, I won't take more than 3-4 minutes because I'll just discuss the important points. So here we go. I'm sharing my screen. Yes, you should be able to see this screen now, guys. So see now, point number one, please, this is the website. Here we go. Point number one, this is the website. You click on this CAP portal, you come here. Trust me, it is easy. I've seen people have made video on this thing for 30-35 minutes. I have no idea why. It's exactly like you must have registered for CET. Okay, then you click on this MBA MMS, which is there on the left hand side. See this now. Here we go. So click on this. It's a new page open now. The link which we have given is directly of this. Now, most important point, please click on new candidate registration. So you might always say, "Nahi, sir, we have already done this process. Nah, sir, we did register for CET. No, guys, CET registration was different. CAP registration is different. So you have to click on new candidate registration. As soon as you click on new candidate registration, something of this sort will come. Now, this was 99% exactly the same process last year. Now, this year they've added something like this. Are you applying as a foreign national? So obviously, people who are, it's no, right? People who are from India, they have to say no. I've seen people giving explanation for this also. Usme kya explanation dena hai? There's no explanation required, right? So I do understand all my students must, मतलब इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे. Simple process, fill all this information. And then you'll receive an OTP on your mobile, right? So make sure the mobile number is active. What's the big deal in that? So when you register, you get an, so after the OTP and everything, right? You have to put that OTP and then you get it's a separate ID. I hope you understand. Once you get that ID and password you have already created, then everything is out. You have to go on registered candidate login. I hope you understand. This is simple. In the detailed video we made last year, it has already been sent to you. It's exactly the same process, guys. So follow that process. Anybody having a doubt, please ask me right now. Because I really don't want to talk on how to register for this. आपको अपना यूनिवर्सिटी पता है, आप स्टेट ओपन हो, SCO, STO, that is something which you're supposed to know on your own. Put all your documents properly. So my piece of advice is, please, ab yahan pe you cannot play around. Your documents, your percentage, your CGPA have to be perfect. They have specifically mentioned here. So when you go on registered candidate login, so I'll go on the registered candidate login, guys. Right. So I won't share this thing here now. Yeah. So I'm going back on this thing. I'll put all the details which I have used. So, and then I'll directly go on the login. And then I'll show you how it looks. So just hold on. Just hold. I'm just putting in my details, guys. Okay, here we go. Yes, I put this. Okay, now I'll share my screen again, guys. Yeah, you should be able to see this now. So basically my ID, I did not apply for CET. So this is something which you can see. It's not a big problem. And it enters a CAPTCHA. I saw there is a person who said, yeah, there is a CAPTCHA which will come and please put the right answer to the CAPTCHA. Oh my goodness, this is horrible. Okay. So please, I don't want to make a video like this. This is something which you will see. Okay. And then start filling it. This is as simple as it is. All, see, you can see on the right hand side, if you start filling this. Now filling कैसे होगा? ये incomplete दिख रहा, आप इसको क्लिक करोगे तो हो जाएगा, right? आप
Guys, I hope you are able to see me because I just got this news that, the news in the sense it's showing me that internet connection is unstable. It's okay. Start filling it. As simple as it gets. Just hold on. So there's a detailed video which we had made last year, guys. So please go through that. Yeah, just hold on. Just hold on. Now this is a problem I was facing last time also. Now let's click on home. So I'm not able to click it. Now this is something which I got from a few students also. So in the first phase, they cannot click it. Take some time. So it will take some time. My point is, fill all this. These are simple details, guys. Nothing really to talk about. Right now, a detailed video is already there. So fill this, fill all this form. Now, the important points which I would like to discuss. So I want to leave this now. Here we go. Now, any doubts in this, guys? Anybody having any doubts, please let me know. Yes, you can, anybody can unmute himself or herself and talk to me. And the best part I'm seeing is very few students are there. That means most of the students must have done the process or they must have understood after watching the video. So I don't want to talk much on that. I want to talk on the next process. Right. You can unmute yourself, ask me whatever doubt you have. Yes, please. Anyone? किसी को कुछ पूछना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज स्टार्टेड देयर आर स्टिल सम ग्लिचेस बट यस नाउ इट हैज स्टार्टेड नाउ ग्लिचेस आर कभी लोड नहीं होता है इट विल टेक सम टाइम आई कांट हेल्प इट so watch the video and start guys are you there can I talk to you people please can someone say hi bye Arbaz Ananya Divyashri Good evening, sir. yes good evening Arbaz I'll talk so good keep asking this question which one is preferable physical center or e-verification guys please from my side prefer physical center please prefer physical center. I'll tell you why. Because in e-verification, they'll take 24 hours of time. So आप जब ये भरोगे, so now last date of registration 7th of July, guys. So now I want to talk on all these things one by one. Here we go. I'm sharing my screen. So now I will prefer talking on all important points here. So keep asking your doubts and I'll start solving. Number one. You have to upload your documents. You have to upload your documents on this portal. Okay? Now, when you upload your documents, they will ask you for verification, which means you can go for physical verification or you can go for e-verification. Which one is preferable? Trust me, guys, we will prefer physical verification. Now, let us understand each and every step properly here. Now, when you go for physical verification, see, if there are doubts, there is some document missing, trust me, guys, every college will help you. I shouldn't say every college, almost 99% of the colleges will help you. Now, let us understand. Because there is somewhere I read or I saw somebody was telling me, Nisa, people are saying that colleges don't help. They don't, they act like government colleges. No, guys, trust me, it doesn't work this way now. Let me explain you the process. In CET, your documents have to be verified. Now, what happens is when you go for an MBA college, when you go to an MBA college, when you are about to take admission, they are supposed to verify all your documents ki yaar aap jhoot to nahi bol rahe ho na aapke sab document barabar hai na whatever you have printed whatever you have given the information is the information correct so whether it is CAT whether it is NMAT whether it is SNAP all these documents are verified when you go for admission the final admission what does CET do ये हमारे पास
एडमिशन के टाइम पे इतना टाइम नहीं है, आप वेरिफिकेशन अभी करवा लो उनसे. Before the cap round, before the admission start, get your document verified. This is what CT wants. Every student has to verify the documentation, which means when admission happens, cap round and all those things, then they know that your documents are correct. So they don't take time for document verification. जिन बच्चों को उन्हें उड़ाना है, if your documents are not proper, वो अभी finish कर देंगे आपको. So to save time later on, they have this process. So that means if your documents are verified right now, that means you are eligible now. अब आपको आगे कुछ document verification नहीं होगा. I hope you understand this now. Which means if you have your caste, so caste certificate, caste validity, EWS अगर है तो EWS, your 10th, your 12th, everything is required now until 7th of July. So what do you have to do? Once you have registered on this portal, preferably go to any physical verification. What do you have to carry? All original. All original docs plus one photocopy. Now ध्यान से सुनो, I will prefer please take 2 photocopies. 2 फोटोकॉपी के सेट लेके जाओ. प्रिफरेबली अगर अटेस्टेड होंगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से तो ठीक है, अगर होंगे तुम. Otherwise, they don't need attested copies because they are the ones who are going to attest it. So they don't need attested copies. Self-attestation is okay. अगर करवा सकते हो अगर in 2 hours, very good. नहीं करवाना मत करो. It is not a mandatory thing. Doesn't matter. Go there. Take your photographs, all original documents and photocopy to a physical verification center. Now next point, ये center कहाँ मिलेगा आपको? There is a list, there is a proper list which they have uploaded on that same website, on this CET Cell website. Plus if you watch the video which I have sent, उस video में मैंने बताया कौन-कौन से center है. Now this year, there is a change which they have made, and the change is you have to select your verification center very in advance. Guys, I'm telling you, I personally now check this thing कि उन्हें आपको personally select करना है क्या verification center advance में. If somebody has checked this, please let me know. Till last year, you did not have to select the center while filling this form. आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना था और कोई भी वेरिफिकेशन सेंटर में आंख बंद करके चले जाओ कभी भी. But I think this year they've launched this. You have to select a center well in advance. आप select कर लो. A lot of people are saying कि अरे आप यही जगह select करो, वही जगह select करो. नहीं guys, trust me, select a center which is near to your place. Now understand this process. Please, आप जहां पे रहते हो उसके आसपास का कोई भी सेंटर सेलेक्ट करो. Most of these centers are management colleges, which means you'll be going to some MBA college to verify your documents. They will upload the documents if you want. वो सब verify करेंगे. They will help you. Now I'm telling you, almost all colleges will help you. The reason being, almost all colleges have their PGDM. उन्हें अपना PGDM बेचना होता है, या फिर this will go on YouTube. उनको अपने इंस्टीट्यूट लेवल सीट डोनेशन पे देने होते हैं. Just imagine, so bluntly I'm saying this. So almost all colleges will पूरा एकदम आपको VIP treatment देंगे. If not VIP, they'll give you decent treatment. They'll help you. Why? Because almost all colleges will be pitching their college to you. जब आप जाओगे ना, वो अपने कॉलेज की तारीफ करेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे. ये होने वाला है. So don't fall into that trap. Let me be honest here. So does it mean कि आपको कोई एक ही कॉलेज सब अच्छे से करेगा? नहीं guys, it doesn't work this way. Trust me, you go to any college, they'll help you. तो सब तुम्हारा अच्छे से करेंगे. Preferably go to a college जो शायद आपने पहले कभी विजिट किया है. So almost all our college students have visited at least 3 or 4 colleges nearby. Check कर लो वो college list में है क्या this ARC document verification के. Go and visit in next 6-7 days, they'll help you.
take their phone number, talk to someone beforehand, take appointment and go there. Now the most important part, वो बोलेंगे अरे हमारा पीजी का फॉर्म भरो, अरे हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा है. सब सुनो, करना नहीं करना, either it is your call or listen to us, talk to us, because every college is different. I wouldn't like to say there are colleges who are already started asking donation for their, either PG or MMS seats. This is point one. They will help you. So this is the first process. Step two. Once this your document verification happens, they will come out with a merit list. They'll come out with a merit list. एक merit list आएगा, and then they will give you time for grievances. So after 7th of July, when all document verifications and everything is over, around 3 days later, they'll come out with a merit list. और उसमें क्या होगा पता है? If there are 110,000 people who have applied for this exam, only there will be 10-20,000 people जो नहीं जाएंगे कैप रजिस्ट्रेशन के लिए, because they must have got admission in some of the other college. किसी का पीजी हो गया, किसी का बेटर एमबी हो गया, किसी का कहीं हो गया. They will not go, right? But the toppers will go. That is what I would like to discuss here. So we are thinking approximately 80 to 90,000 people will register for this CAP process. Then they'll give three. So there is a merit list which will come out. तो हर बच्चे को एक merit rank मिलेगा. Then there'll be grievances के लिए 4-5 days given. So अगर आपको कुछ grievance है तो आप mail लिखो. To be honest, कुछ ज़्यादा होता नहीं है. 4-5 days goes for a toss only. And then the final merit list will come out. Based on this merit list, so we are expecting approximately 12th July, the cap round process will start. So I haven't personally seen the exact date, the dates, but I think it's around the same lines. 12th July, the cap round process will start. So let us understand this cap round process. I hope you must have understood till now. मेरिट लिस्ट बाद आएगा, आपको एक रैंक मिलेगा अपना, स्टेट रैंक, होम यूनिवर्सिटी रैंक, ओबीसी रैंक, जो भी रैंक आपको एक रैंक मिलेगा. बेस्ड ऑन दैट रैंक दे विल कम आउट विद, देन द कैप राउंड प्रोसेस विल स्टार्ट. सो आई वांट टू टॉक मोर ऑन द कैप राउंड हियर कि क्या होता है उसमें. सो ऑन द सेम आईडी पासवर्ड व्हिच यू हैव क्रिएटेड राइट नाउ, यू विल हैव टू लॉग इन ऑन 12th July और 15th July, व्हाटएवर द डेट इज. आपको लॉग इन करना है यही आईडी पासवर्ड से, यही आईडी पासवर्ड से, और देन द प्रोसेस विल स्टार्ट. यू विल गेट अराउंड 3 days टाइम ओनली फॉर कैप राउंड 1. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रोसेस इज. हर बच्चे को पूछा जाता है, पुट 100 colleges in the preference. Okay, this is where I'll take time. Please understand this. यहाँ पे मैं थोड़ा समय लूंगा क्योंकि ये ज्यादा जरूरी समझना. So put the college in your preferences. Now, tell me, somebody who's got 10 percentile, somebody who's got 40 percentile, somebody who's got 90 percentile, what preference will you put? आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा? अरे तेरा परसेंटाइल कुछ भी हो, what will be your first preference? Tell me. Can someone tell me what will be your first preference? Yes, please. Yes, Arbaz says GB. Anyone else? आपका कोई भी परसेंटाइल होगा, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा? नाउ दिस इज वेयर द कॉमन सेंस प्रिवेल्स. मतलब पीपल मेक बिग वीडियोस ऑन दिस. आई हैव नो आइडिया व्हाट दे डू. भाई कैप राउंड प्रोसेस फिक्स्ड है. For so many years it has been fixed. Yes, Sakshi, every person the first preference is going to be JVNS. अरे 0 परसेंटाइल वाला भी फर्स्ट प्रेफरेंस ही डालेगा. मतलब अगर तुम ये फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं डालोगे तो तुम बेवकूफ हो. What will be preference to? Sit down now. See, the system is asking what is your preference. I hope you understand what I'm saying. Preference 3, Bellingcat. Preference 4, Pumba. Preference 5, SIES. Preference 6, Xavier's or Chetna, whatever you want. And Chetna. And iske niche, it's okay. So then you put whatever you want.
I am telling you, everybody will put like this, whether you are a 0 percentile, whether you are 20 percentile, और जो ये ऐसा नहीं डालेगा ना, मतलब वो बेवकूफ है. It's simple as it gets. आपको प्रेफरेंस यही डालना सबको. So then उसके नीचे फिर ट्रस्ट में इसके नीचे आप somebody will pay Thakur, somebody might put DSIMS, somebody might put KBS, somebody might put Rizvi. कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इसके नीचे आपको जो डालना डाल दो. Trust me, this is where we are different, guys. मैं आपको clearly बोल रहा हूँ. I've been seeing it. There's the same thing I'm going to put on YouTube also. सब पैकेजेस सेम ही है भाई. सब 6 लाख 5 लाख कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम्हारा प्रेफरेंस देख लो, तुम्हें जिधर जाना है चले जाओ. गेम गेम पूरा यहाँ पे है. this this. इनफैक्ट यहाँ पे भी गेम नहीं है, जो भी गेम है सब इधर ही है. Because this is where the package is 27-28 lakh, package around 12 to 13 lakh, package almost 10 to 11 lakh, package around 8 to 9 lakh, package around 7.8 to 8 lakh, and package around 7 lakh. उसके बाद में सब वही, सब जगह पैकेजेस सेम ही है. This is where the game is. Simple, right? So this is point one. After that, आपको जो डालना आप डालो, it doesn't matter. Number two, how does the system work? Let us understand this. How does the system work? What does system do? Let's say there is a person who has got rank 1. This is what the system does. Rank 1 is the merit list. Forget the scores now. आपका rank 1 है. Rank 1 ने number 1 पे कॉलेज कौन सा डाला है? अगर वो बेवकूफ होगा, अगर उसने नंबर 1 पे सिग्नम डाला है, दिस इज बेवकूफी है. Nobody does that. इतना कोई बेवकूफ नहीं होता है. Let's say yes, put JVIMS. What will system do? Please understand this. System will check क्या JB में सीट अवेलेबल है. ये रैंक 1 है बच्चा यार, अभी रैंक 1 सीट अवेलेबल है क्योंकि इस रैंक 1 इसको सीट एलोकेट हो जाएगा. Then system will go to rank 2. They will check what is the first preference this guy has put. Let's say this guy has put Viva. ठीक है, ध्यान से सुनो. And number 2 पे has put JVIMS. You know what will system do? System will give him Viva. भाई तू रैंक 2 है, तेरा फर्स्ट प्रेफरेंस Viva है, लेने Viva, बात खत्म हो गई. I hope you understand this now. So will anybody do that? Nobody will do that. I hope you understand this now. Nobody will do that. तो वो रैंक 2 वाला भी JB लिखेगा, रैंक 3 भी JB लिखेगा. Now what will happen? Rank 65. There are 53 open seats in JVIMS. तो फर्स्ट 53 रैंक को JB मिल जाएगा. 65th रैंक वाले ने what would he have done? His first preference would have been JVIMS. What would be his second preference? Sydenham. System will check क्या JB में सीट बचे हैं अभी. तो क्या रैंक 1 को दे दिया, 2 को दे दिया, 3 को दे दिया, 4 को दे दिया. ओपन सीट्स इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने कहा जेबी की तो सीट खत्म हो गई, हमने दे दिया फर्स्ट 53 रैंकर्स को. सिडनम में सीट बचे क्या? हाँ, सिडनम में सीट बचे हैं. यू विल गेट सिडनम. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो विल गेट दिस. सिडनम का सीट उसको मिल जाएगा क्योंकि रैंक 65 है. लेट्स लुक एट रैंक 720. व्हाट विल हैपन? व्हाट विल सिस्टम डू? सिस्टम चेक करेगा व्हाट इज द प्रेफरेंस दिस गाय इज रिटन. ही हैज रिटन जेबी, he has written Sydenham, he has written Wellinger, he has written whatever, all these names. वो देखेगा क्या यहाँ पे सीट अवेलेबल है. अरे नहीं यार, पहले 53 रैंक को दे दिया ना जेबी, तो खत्म हो गया. Sydenham उसके नेक्स्ट 100 बच्चों को Sydenham दे दिया. अच्छा, उसके नेक्स्ट 80 स्टूडेंट्स को वेलिंगर मिल गया बिकॉज वॉट एवर नंबर ऑफ सीट्स आर देयर इन द कैप राउंड. उसके नेक्स्ट बच्चों को जो उसने नाम लिखा वो मिल गया. तो देन दे विल चेक कि इसका, दिस पर्सन का व्हाट इज द कॉलेज का नेम इज रिटन हियर.
सो इसका सीट खत्म, 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 वॉट एवर ही इज गिवन। यहाँ पे इसने कौन सा कॉलेज डाला है? लालास। 720 का रहेंगे एग्जाम्पल। हाँ, क्या लालास में अभी सीट है? हाँ, लालास अभी तक गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ, चलो इसको लालास इसने डाला है। दिस स्टूडेंट इज पुट इन लालास, दे दो उसको लालास। I hope you're getting this point now. So this is how the system works, which means if your rank is, let's say, 4,000, logically, what should you put as your preference one? तू तो जेबी डालेगा ना यार। Let system do his or her own work यार। तुम पहला प्रेफरेंस जेबी डाल दो, सेकंड प्रेफरेंस सिट नेम डाल दो, तुम्हारा रैंकिंग तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 8 और 9 कॉलेजेस। उसके बाद में जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हें अच्छा लगता है कॉलेज, उसका नाम लिख दो यहाँ पे। Trust me, after 8th, 9th rank, it's all more or less same. Lot of people say, अरे तुम थर्ड कैप राउंड तक वेट करो, तुम्हें 32nd रैंक से हो सकता है 28th रैंक का कॉलेज मिल जाए। सीरियसली, डज इट मैटर? टॉक लॉजिकल, डज इट मैटर? वो प्लेसमेंट सेम ही होने वाला है। तुम देखो तुम्हारे पास में कौन सा कॉलेज है, तुम्हें कौन सा कॉलेज जम रहा है, वो नाम डाल दो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। देन कम्स कैप राउंड 2। What is cap round 2? So how the system works, if you get the first rank का college, first rank मतलब sorry, your first preference का college, your first preference, then you don't have an option, you have to take admission. अब आप नेक्स्ट कैप राउंड में जा नहीं सकते, आपको फर्स्ट में जाके लेना ही है एडमिशन। But if you get a college which is in preference 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी नीचे के प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है ना, then you have an option, you can go for float option। वो आएगा बाद में दिखेगा। What is the meaning of float? फ्लोट का मतलब क्या हो गया कि आप उस कॉलेज में अपना सीट बुक कर रहे हो। लिसन टू मी केयरफुली, सो लेट अस सी, अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। This process is mostly applicable for people जो जेबी, सिटनम, वेलिंगकर, जो टॉप के 6-7 कॉलेजेस है उसमें गेम खेल रहे हैं, और नीचे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट अस सी, देयर इज अ पर्सन हु जिसने जेबी लिखा, सिटनम लिखा, वेलिंगकर लिखा, एसआईएस लिखा, कुंबा लिखा, एंड देन चेतना लिखा, एंड लेट्स ये इतना ही देखते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस पर्सन हैज गॉट दिस कॉलेज, इसको वो कॉलेज मिल गया, मतलब हिज रैंक इज डिसेंट, he's got this college. There are two options, या तो जाके एडमिशन ले लें, that is called freeze, you go and take admission there। और अगर एडमिशन नहीं लिया तो क्या कर सकता है? नहीं सर, मेरे को नेक्स्ट कैप राउंड में चेक करना है, क्या मुझे बेटर कॉलेज मिल सकता है नेक्स्ट कैप राउंड में, देन यू गो फॉर फ्लोट। What is float? Float means you are booking your seat here, huh? Which means you have to go visit the college, book your seat, pay 1,000 rupees, huh? कुछ 1,000 या 5,000 rupees कुछ तो एक अमाउंट रहेगा, book the seat and then click on the float का option। What is the float का option? It means आपने सीट बुक किया, लेकिन अगर नेक्स्ट कैप राउंड में आपको बेटर मिला, दैट मींस यू विल ऑटोमेटिकली, आपको बेटर मिलेगा, मतलब यू वुड लाइक टू गो फॉर बेटरमेंट, लेकिन आपने अपना सीट बुक किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। दिस इज, सो दीज आर टू ऑप्शंस, फ्लोट एंड फ्रीज। फ्रीज मतलब ले लिया एडमिशन, मैटर खत्म। फ्लोट मीन्स आई वॉन्ट टू गो फॉर बेटरमेंट, अगर मेरे को कैप राउंड 2 में मिला। सेम थिंग फॉर कैप राउंड 3। नाउ द पॉइंट इज 99.99% of the times everybody will go for float only। This is how system works। मुझे बोला ना, कौन फ्लोट में नहीं जाना चाहेगा यार? एवरीबडी वुड लाइक, स्पेशली हियर, यार ठीक है यार, ऐसा ही मिला तो ले लूंगा, लेकिन अगर नेक्स्ट कैप में मेरे को वेलिंगकर मिल गया तो मैं जाना चाहूंगा, उसके नेक्स्ट में सिडनम मिल गया तो मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगा? एवरीबडी विल, ट्रस्ट मी, अदर देन जेबी, इवन हर सिडनम का बच्चा, एवरी स्टूडेंट हु गेट सिडनम विल क्लिक ऑन द फ्लोट का बटन।
हो सकता है मुझे ये भी मिल जाए नेक्स्ट कैप राउंड में। हाउ डज दिस वर्क, ये सुनो अच्छे से। हाउ डज दिस वर्क? व्हाट हैपेंस इज एवरी, क्या होता है ना, लेट्स से 53 पीपल गॉट जेबी के सीट, 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो जेबी नहीं जाएंगे, पर 2 या 3 ही होंगे। कई बार तो एक ही बच्चा रहता है जो जेबी नहीं जाता है। क्यों जेबी नहीं जाता है वो? क्यों? क्योंकि वो या उसका आयन कैलकाटा हो चुका है, अभी तुम्हारे पास सीटी में टाइम पास खेलने आया था वो, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम होता है, तो इट डजंट गो इन टेक ब्लॉक हिज सीट। विच मीन्स सिडनम का जो रैंक 1 होगा, सिडनम मतलब आई होप विच मीन्स 54th और द 55th रैंक पर्सन, जिसको सबसे पहले सिडनम मिला, अगर वो, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस, उसने फ्लोट पे क्लिक किया है, दैट मीन्स नाउ इन कैप राउंड 2 ये बंदे को जेबी मिल जाएगा। आई होप यू गेट दिस नाउ। विच मीन्स वेलिंकर का जो रैंक 1 होगा उसको सिडनम मिल जाएगा नेक्स्ट कैप में, क्योंकि सिडनम का सीट खाली हो गया। सो ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। And every year what happens is ना, वेलिंकर में 8 to 10 सीट्स वेकेंट हो जाते हैं कैप राउंड 1 में। 8 to 10 सीट मतलब इसके 10 लोग इधर चले जाते हैं, इसके 15 लोग इधर, इसके 15 लोग इधर, इसके 2 लोग इधर, ऐसा सीट ऊपर जाते रहता है। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज वेयर आई सी द मिस्टेक। एक बच्चा जिसका रैंक 4000 है, मतलब सीरियसली तुमको ये गेम में पढ़ना चाहिए। दिस इज अ गेम फॉर फर्स्ट 600 to 700 रैंक्स। आपका अगर वो रैंक आता है तो ये पूरा गेम खेलो। आई हैव नो आइडिया, आई हैव सीन 20,000 व्यूज ऑन वीडियोस जो ये बात करते हैं। भाई ये 600-700 रैंक वाले ये गेम देख लो ना यार। आई होप उनके लिए ये गेम है भाई, बिकॉज सी दोस 3 सीट्स, जेबी में किसी 3 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो सिडनम वाला इधर जाएगा, वेलिंकर वाला इधर जाएगा, गेम फ्लोट पे है। बट कौन से बच्चों के लिए जिनका 700 या 800 रैंक है, दैट्स इट। उसके नीचे इट डजंट मैटर मच। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सो दिस इज इट गाइज। So once cap round start, actual cap round starts, we'll make another video. I'll take another session, but this is how the process will work. Mid-July is when cap round 1 will start, and mostly by 28th July, 30th July, cap round 3 will be over. And we are expecting colleges to start by around 8th or 10th August, mostly. मतलब actual date क्या दिया वो छोड़ दो, but that is when the colleges will start MMS. Any questions you have, feel free to ask. Yes, please. किसी को कुछ पूछना है? Come on, fast. Arbaz, Bushra, any question, feel free to ask. Jagdish Bhagat, Jairaj, Kalpana, Mansi, any question, feel free to ask. So this, I was talking to a student today. I think it was Kalpana. I don't remember the name exactly. और she has already taken a college. Let's say भारती विद्यापीठ उसने शायद लिया। भाई आप भी अपना रैंकिंग जीबी सिटना मेलिंग कर ही डालो ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप रैंकिंग में डालना, भारतीय विद्यापीठ डालना नहीं डालना वो आप डिसाइड करो, दैट इज योर कॉल। लेट्स सी, मतलब दिस इज गोइंग ऑन यूट्यूब। The average package of the college is 4.5 lakh. I don't know whether that student is here or not. मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। If you can get better, try करो। Trust me, this is 4 lakh average package मुझे थोड़ा नहीं acceptable है। Try and go for a college जिसका average package 5.5 lakh हो। Trust me, this will go a long way. Choice is yours. बच्चे को मैं बोलना चाहता था, but anyways, this go on YouTube में लिंक भेज दूंगा, सब देख लेना। Yes, शुभम, सिद्धि, श्रीदेवी, तीर्थ, तेरे को कुछ पूछना है इसमें? तीर्थ, आर यू देयर? Yes, sir. Can you बोल। hear me? यस यस। फॉर्म तो पूरा भर दिया, तो फिजिकल जो होगा स्क्रूटिनी उसमें मैं अपना क्लोजेस्ट सिलेक्ट करूंगा, बट स्लॉट भी सिलेक्ट करना पड़ता है, वो लास्ट टाइम जैसा नहीं है। नहीं अभी देख, टू बी ऑनेस्ट, गुड दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट पर्सनली फॉलोड द होल प्रोसेस। So guys, I will request someone to follow the whole process and tell me slot भी बुक करना है क्या? तो slot बुक करना है मतलब there is a specific slot
जो मर्जी है वो स्लॉट बुक कर, 7 days का टाइम है. आई विल प्रीफर बुक द स्लॉट एज सुन एज पॉसिबल because there will be a lot. सर लास्ट टाइम सर लास्ट टाइम सराफ था मेरा एफसी सेंटर क्लोजेस्ट. हेलो. Yeah, I can hear you. Tell me. Guys, I can hear you. Yes, tell me now. हेलो. हाँ सर, लास्ट टाइम सराफ एफसी सेंटर गया था मैं. तो इस टाइम वो बुक करने जा रहा हूँ स्लॉट, तो उसमें बता नहीं रहा सर. DSIMS देख यार, DSIMS होगा. चेक करता हूँ. अच्छा, और नहीं है तो कोई भी कॉलेज ले लेना आजू बाजू में, ठाकुर, फ्रांसिस, आदित्य, क्या फर्क पड़ने वाला है. ठीक है सर. बस ये ध्यान रखना, तीर तू जाएगा ना, हाँ. पीपल है दिस, वो अपना पीजी बेचेंगे. तेरा कुछ कितना 99 पॉइंट कितना परसेंटाइल है? 7 99.70. 70. राइट, तो अपन सिडनम और जेबी की बात कर रहे हैं, करेक्ट ना? यस सर. तो वो बेचेंगे, लेकिन तेरे को लेने का नहीं. वैसे भी तू तो वैसे भी किधर लेगा. बट एनीवेज, दिस इज गोइंग टू हैपन. तू चुपचाप सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो. इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू हैपन गाइस, प्लीज ऑल ऑफ यू लिसन टू दिस. एवरी कॉलेज विल से, अरे हमारा नाम 5वें नंबर पे डाल देना, वो 3रे नंबर पे हमारा नाम डाल देना. यस सर, यस सर, यस सर, यस बोल के छोड़ दो, डालना नहीं है. वो पहले 6 नाम फिक्स है. देन वट एवर यू वांट टू डू, प्लीज डू. Yes, Vaibhavi, I'll send the colleges ki cutoff list. Guys, I think colleges ki cutoff list I have already given. Right, I'll send it in all groups. Okay. Yes, anyone else? Any more questions, please feel free to ask. That's it.